Exercise 10.4 of vector analysis. The question number 1. Find magnitude of A cross B. If A equal to I minus 7j plus 7k and B vector equal to 3i minus 2j plus 2k. Okay, this is the one. The formula of A cross B equal to the determinant value of I, j, k and the A1, A2, A3 and B1, B2, B3, just like a determinant value. So now find A cross B. I, j and k. The value is 1, minus 7, 7, 3, minus 2 and 2. Solve by using determinant method. I cap minus 7, 7 minus 2, 2. Minus j is 1, 1, 3, 7, 2. 1, 3, 7, 2. And plus k is 1 minus 7, 3 minus 2. 1 minus 7, 3 minus 2. Now the value I minus 7 into 2, minus 7 into minus 14 direct, minus 14 minus minus 14, minus j 2 minus 7 into 3 21, plus k minus 2 plus minus minus plus 7 into the 21. So we get 0 minus 14 plus 14 0 plus 19j plus 19k. Okay. Now find the value of magnitude of A cross B, which is equal to the under root 0 square plus 19 square plus 19 square. It means 2 under root 2 into 19 square. So we get 19 root 2. This is the answer, magnitude of A cross B. Question number 2. Find a unit vector perpendicular to each of the vector A plus B and A minus B, where A equal to 3i plus 2j plus 2k and B equal to I plus 2j minus 2k. There is vector A and vector B. Find the another vector which is equal to the A plus B. A plus B we get 3i plus I 4i, 2i plus 2i 4j plus 2i minus 2i is 0k. Okay, and the another vector D equal to vector A minus vector B. A minus B 3 minus 1 2i. Okay, next 2i minus 2i 0j and 4k. A minus B minus plus 4k. Okay, now the another vector unit vector N, C cross D. So C cross D means I, j, k, and the value 4, 4, 0, 2, 0, 4. 4, 4, 0, 2, 0, 4. Now multiply I 4, 0, 0, 4 minus j cap. J is 4, 0, 2, 4. 4, 0, 2, 4. And the K 4, 4, 2, 0. 4, 4, 2, 0. Now we get 4 into 4, 16i. Okay, 4 into 4, 16j. And 0, 4 to the 8 minus 8k. Okay, this is the cross product.
Now the magnitude of this, under root 16 square plus minus 16 whole square plus minus 8 whole square. So we get 256 plus 256 plus 64 equal to the 576.24. This is the magnitude of n. Now the unit vector, n. It is the vector n by magnitude of n. It is equal to the 16i minus 16j minus 8k by 24. Okay, we can write 16 by 24i minus 16 by 24 j minus 8 upon 24k. We get the value is plus minus both. The answer is 2 by 3i minus 2 by 3j minus 1 by 3k. Okay, this is the unit vector. The question number 3, if a unit vector A makes an angle pi by 3 with I, pi by 4 with j, and acute angle theta with the k, find theta and hence the component of A. Let A vector, okay, equal to xi yj plus zk is a unit vector. Be a unit vector. Unit vector means magnitude of this equal to under root x square plus y square plus z square equal to 1. Now solve, we get x square, squaring both sides, we get 1. Okay, first, given that the angle between vectors A and I is, I means I dot 0j plus 0k. Okay, the vector I equal to this. Given क्या दिया हुआ, एज पाई बाई 3. फर्स्ट द एंगल बिटवीन एंगल एम एक्स पाई बाई 3 विद आई के साथ पाई बाई 3 है. तो नाउ सॉल्व कॉस पाई बाई 3 इक्वल टू मल्टीपल ए एंड आई क्रॉस डॉट प्रोडक्ट and magnitude of A upon magnitude of I. Now solve cos pi by 3 is 1 by 2 and product this and this. Okay, so x into 1, y into 0 and z into 0 by magnitude of A is 1 and it is equal to the x equal to 1 by 2. X equal to 1 by 2. Magnitude of A is 1 and the magnitude of this is also 1. Next, second, given that angle between vectors A and j equal to 0 I plus j plus 0 k is pi by 4. It means cos pi by 4 equal to again x 0 y 1 z 0
multiply by the magnitude of A is 1 and magnitude of J is also 1. So cos pi by 4 is 1 by root 2, y equal to 1 by root 2. Okay, the cos pi by 4 equal to A dot J by magnitude of A and magnitude of J. Okay, next third, what is given? Acute angle theta. Given that angle between vectors A and K, K equal to 0i plus 0j plus K is theta. Okay, is theta. So now therefore cos theta equal to vector A into vector K by magnitude of A dot K. It is 0 x 0 into y plus 1 into K. Okay, equal upon 1 dot 1. It is equal to the z into 1 z. So z equal to cos theta. This is the equation number 1. Put the value of x, y, z in equation 1. Putting the values of x, y and z in equation 1. The first x square means 1 by 2 whole square plus 1 by root 2 whole square plus cos square theta equal to 1. Cos square theta equal to 1 minus 1 by 4 minus 1 by 2. 1 minus 1 by 4 minus 1 by 2. It means 1 by 4. Cos theta equal to plus minus 1 by 2. Okay, theta is the acute angle, theta positive. Then theta 1 by 2, it means cos pi by 3. Theta equal to pi by 3. Okay, and the vector A equal to xi, x की value 1 by 2 I plus 1 by root 2 j plus 1 by 2 k, because cos theta equal to k, z equal to 1 by 2, cos theta z equal to cos theta and cos theta equal to 1 by 2. Now the vector is 1 by 2i plus 1 by root 2j plus 1 by 2k. Angle but pi by 3. The question number 4, show that A minus B cross A plus B equal to 2 times A cross B. Okay, the LHS, A minus B cross A plus B. Okay, so we get first A cross A, okay, plus A cross B. A cross A plus A cross B minus B cross A minus B cross B. Okay, now A cross A equal to 0 and A cross B and minus, it means we can write sign change, A cross B minus B cross A equal to A cross B minus 0 vector. A cross A 0 vector, 0 0 cancel, we get 2 times A cross B. इसमें A cross A equal to 0
and B cross A, B cross B equal to 0 and A cross B equal to minus B cross A. Proved. The question number 5, find lambda and mu if 2i plus j 6j plus 27k cross I cross lambda j plus mu k equal to 0. 2i plus 6j, find the value of lambda and mu. Now the cross product, so we get here I, j and k. 2, 6, 27, 1 lambda mu equal to 0. Okay, now I 6, 27 lambda mu minus j 2, 27 1 mu and k 2, 6 1 lambda equal to 0. Okay, so in the 0 we can write 0 dot I, 0 k, j and 0 k. Now I 6 mu minus 27 lambda minus j 2 mu minus 27 and k 2 lambda minus 6 equal to 0 I, 0 j and 0 k. Now compare the first 6 mu minus 27 lambda equal to 0, 2 mu minus 27 equal to 0 and 2 lambda minus 6 equal to 0. From 1 2, 3. From 2 mu minus 27 equal to 0. Therefore, mu equal to 27 by 2. From 3, from 2 lambda minus 6 equal to 0. Therefore, lambda equal to 6. Okay, and the value of 6 lambda minus 27. Now put the value of lambda and mu in 1. 6 mu minus 27 lambda. 6 mu is 27 by 2 minus 27 into 6 lambda. 27 into 3, 81 minus 2 lambda minus 6 by lambda equal to 3. 2 lambda minus 6 equal to 0, lambda equal to 3. Now put the value in 6 mu minus 27 lambda. So 6 into 27 by 2 and 27 into 3. 81 minus 81 equal to 0. It means which is true. Therefore, the value of mu equal to 27 by 2 and lambda equal to 3. Question number 6. Given that A dot B equal to 0 and A cross B equal to 0, what can you conclude about the vectors A and B? If A dot B equal to 0 and A cross B is also 0. If A dot B equal to 0, it means magnitude of A into cos theta equal to 0, because cos theta equal to होता है A dot B by 2. Okay, so this equal to 0. It means either magnitude of A equal to 0 or magnitude of B equal to 0 or cos theta equal to 0. Okay, cos theta equal to 0. A equal to 0, B equal to 0, theta equal to 90 डिग्री. और इसका मतलब क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री.
फिर अगेन आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 या वेक्टर बी इक्वल टू 0, दोनों में से कोई भी एक 0 होगा। तो वेक्टर या फिर वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 इट मीन्स बोथ आर परपेंडिकुलर टू बी। अगर एक दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब वो क्या हो जाते हैं, आपस में परपेंडिकुलर। नाउ अगेन नेक्स्ट, ये डॉट प्रोडक्ट की बात है। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 0। तो यहां से पता चलेगा ए इंटू बी क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि यहां पर क्या होता है हमारा ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा। इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन इक्वल टू 0। फिर यहां से वही वाली बात आएगी, आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 और साइन थीटा इक्वल टू 0। अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है मीन्स थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों ही केस में। अब यहां पर देखिए, फिर नेक्स्ट आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0 और द वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर or the parallel, बिकॉज थीटा एंगल 0 है, या तो कोलिनियर होंगे या फिर पैरेलल वेक्टर्स। ए एंड बी या तो पैरेलल हैं या फिर कोलिनियर हैं। अब देखिए दोनों ही केस में कॉमन यूज है कि परपेंडिकुलर टू ईचर है और पैरेलल भी है। तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, ए एंड बी पैरेलल भी हो और एंड परपेंडिकुलर भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों चीज क्या होता है, एंड परपेंडिकुलर, बोथ केस इज नॉट पॉसिबल। ये दोनों ही केस एक साथ नहीं पॉसिबल हो सकते, या तो परपेंडिकुलर होगा या फिर पैरेलल होगा। तो यहां पर 3 कंडीशन हमारी बन गई। ठीक है, तो या तो हम लोग कहेंगे इसका मतलब ये 0 है, वेक्टर ए 0 है या वेक्टर बी 0 है ना। या जब ए और बी में 0 है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो 0 एंड क्रॉस प्रोडक्ट भी 0। अगर दोनों में से एक भी अगर 0 है तो डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 आएगा। देयरफॉर इधर इसका मतलब दोनों में से एक ना एक वेक्टर कंपल्सरली 0 है।